अच्छा जी, I'm going to talk about how to resolve the vectors on a slope. For example, we have a slope. Sometimes we need to resolve the vectors on a slope. We'll see that. So for example, you have here an inclined plane like this, and you have here, let me draw it again. You have here, for example, an inclined plane like this, like this, and you have this angle theta, for example. Okay, as you can see here. And for example, you have here a box which has weight mg. This weight is acting here, right? I'll call this mg. Now what I want to do is I want to resolve this weight, but for that I need the angle for that. You should know what? You should know that this is forming here a right angle triangle. You see, like this, and this angle is also equal, always equal to this angle. This angle is always equal to this angle. And why is that so? ऐसा क्यों होता है? अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये आपके पास स्लोप है लाइक दिस, ये आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और ये अगर आपके पास एंगल थीटा है और मैं इसको अगर वेट को नीचे की तरफ एक्सटेंड करूं लाइक दिस, तो ये 90 है आपके पास, और ये वाला जो एंगल होगा ना आपके पास दिस वन, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा. दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा. ऐसे ही है, बिकॉज दिस इज थीटा, दिस इज 90. 180 ट्रायंगल में एंगल्स के सम होते हैं. सो 180 में से अगर आप माइनस करें इसको और इसको, दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, राइट. अब अगर आप गौर करें थोड़ा सा और, तो ये चीज 90 बना रही है. दिस इज ऑल्सो 90. दिस इज फॉर्मिंग 90. एंड what you're trying to figure out, you're trying to figure out this angle here, this angle. So you can find this angle if you subtract this 90 minus theta from this. अगर आप इस 90 minus theta को इस पूरे 90 से minus कर देंगे, तो what you'll get is you have 90 minus 90 minus theta, and you get what? You get 90 minus 90 plus theta, and you see what? This angle here is nothing but theta. This is trigonometry that you can apply. So remember that this angle theta here is always equal to this angle theta. ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल की इक्वल होगा. आपने हमेशा ये बनाना है. Is that this angle is always going to be equal to theta. Now if you see here, now this is a right angle triangle. अच्छा, मैंने आपको बताया था ये जो आपके पास ये जो एंगल थीटा है, इसके यहाँ पे एडजेसेंट बिल्कुल इसके साथ इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? अगर आप गौर करें तो ये इस तरह से है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बन रही है. अगर ये mg है और ये थीटा है, तो इसके सामने वाला बनेगा mg sin थीटा. दिस इज गोइंग टू बी mg sin ऑफ थीटा. और इसके एडजस्टेंट क्या बनेगा? देखिए, इसके सामने mg sin थीटा बन रहा है, ऑपोजिट बिल्कुल, और उसके एंगल के एडजस्टेंट बनते हैं mg cos थीटा. So this one is going to be, if the adjacent one with this angle is mg cos of theta, this force. तो ये जो component आपको नजर आ रहा है ये वाला, this is mg sin theta. Is that clear जी? तो आपको यहाँ पे एक फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ओवरकम करने के लिए. अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो ये फोर्स इसके इक्विवेलेंट होगी. अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये फोर्स इससे ज्यादा होगी. Yes, I can explain here that how theta is the same. If you look closely, this angle here, as you can see, is theta. This is the slope. This angle is theta. If you look closely here, this is the weight which is coming down here. अच्छा, अगर ये theta है और मैं इसको थोड़ा extend करूं तो ये 90 degree है. Marwa, can you see here? In a triangle, the sum of all angles is equal to 180 degree. So this angle here is x, for example. So you should know that x plus 90 plus theta
is equal to 180. And x would be what? That would be 90 minus theta. So this angle here is equal to 90 minus theta, right? अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो this was the component of weight. This was the weight, in fact, mg. Now if you look closely here, आपको ये वाला एंगल चाहिए. अच्छा, ये आपके पास ये जो पूरा है ये पार्ट, ये 90 डिग्री है, ठीक है. और आपको पता है x किसकी इक्वल है? 90 माइनस थीटा के. दिस x इज 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 है. तो 90 में से जब ये माइनस करेंगे तो ये एंगल नहीं आ जाएगा, ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा. दिस वन विल गेट दिस एंगल. सो 90, this entire one is 90 minus this x, which is 90 minus theta, will give you what? That will give you theta. So this angle is always theta. Is that clear? अच्छा, उसके बाद what happens if you want to resolve the vectors and you have to find the resultant? In fact, आपके पास different forces लग रही हैं और आपने resultant calculate करना. Let's do that. Resolution of vectors. I have here a point here like this, और मेरे पास यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F, ठीक है. इसका एंगल है थीटा. एक मेरे पास फोर्स लग रही है यहाँ पे T, इसका एंगल है अल्फा. एक फोर्स मेरे पास यहां पे लग रही है W, एक फोर्स मेरे पास यहां पे लग रही है W. दिस एंगल इज फॉर एग्जांपल बीटा. अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपने इसका रिजल्टेंट बताना है, इन सब फोर्सेस का आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना. तो ऑब्वियसली अब आप ये डिफरेंट एंगल्स पे हैं, आपको पहले तो या तो एंगल्स बताएगा वो और साथ फोर्सेस बताएगा और आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, असल में आपकी कोशिश होगी कि आप टोटल रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालें. आप रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालें और उसका स्क्वायर लेके दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लें. व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल मेक कंपोनेंट्स. दिस कंपोनेंट इज f cos of theta, and this component is f sin of theta. अच्छा, उसके बाद जब रिजॉल्व करना आएगा तो यू हैव टू डू इट. अच्छा, उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट हियर दिस वन इज व्हाट, दिस इज t, ये क्या होगा जी? t sin अल्फा, और ये बनेगा, अच्छा ये वाला आपके पास बनेगा W cos of beta. This one is, now you have resolved all of them into their components. Yeah, the clear? You have resolved it into its components, right? Now you have to understand here that since we're dealing with vectors, the right direction can be taken as positive, the left direction can be taken as negative, the up direction is taken as positive, the down is taken as negative. Okay, we have to understand these sign conventions. अच्छा, अब अगर आप फर्दर इस पे बात करें तो ये आपके पास जो f x है x डायरेक्शन में, वो तो है क्या होगा जी? प्लस f cos of theta, ठीक है, प्लस t cos of alpha minus w cos of beta, because it is towards the left. So you are only dealing with the horizontal components at the moment. That's why I've written here x. So this becomes fx is equal to f cos of theta plus t cos of alpha minus w cos of beta. You'll get one equation here. इसमें अगर आप f, t और b की वैल्यू आपको पता हो और थीटा, अल्फा और बीटा पता हो तो आपके पास एक होल नंबर में आंसर आ जाएगा. अगर आपको एंगल्स पता है और अगर आपको फोर्सेस पता है, दे विल गिव यू.
So far so good. Then we have fy, and we can write here this is plus f sine of theta plus w sine of beta. This one is at the top and this one is down, so this is minus t sine of alpha. You get what you get, f sine of theta plus w sine of beta minus t sine of alpha. And if you have been given the angles and these w, f and t, what you can do is you can find the whole number. Now if they ask you to find the resultant of all of this, you should know that f is going to be equivalent to what? fx whole square plus fy whole square square root. इसमें एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, जो आपका आंसर अगर पॉजिटिव आएगा fx का और fy का, इसका मतलब है कि fx यहां लाई कर रहा है राइट की तरफ। अगर fx पॉजिटिव आता है, अगर आपके पास fx पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है ये राइट पे लाई कर रहा है रिजल्टेंट, और अगर आपका fy पॉजिटिव आता है तो वो ऊपर लाई कर रहा होगा। अगर fx नेगेटिव लाई कर रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ होगा। अगर fx का आंसर नेगेटिव आता है तो वो लेफ्ट की तरफ होगा ना, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अगर fx का आंसर नेगेटिव आता है तो fx लेफ्ट की तरफ होगा, और fy अगर पॉजिटिव आता है तो ऊपर की तरफ होगा। ये चीजें आपने ख्याल रखनी है जब आप एंगल निकालेंगे। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, व्हेन यू फाइंड द डायरेक्शन इज टेंजेंट थीटा is equal to ry over rx. If I can say इसको मैं बल्कि fy over fx लिख देता हूँ, I can write here tangent theta is fy over fx, and you can find the value of theta, which is tangent inverse fy over fx. ठीक है मेहदी, अगर आपका एंगल यहाँ पे आ रहा है तो आप ये थीटा होगा, इस तरफ आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा इट इज along the horizontal towards the west, right, whatever, या आप नॉर्थ वेस्ट बताएंगे इसके साथ, ठीक है, something like that, 90 में से माइनस करके. So this is the procedure that you have to do. You have been shown two cables are attached to the bracket and exert forces as shown. What are the magnitudes of the horizontal and vertical components of the resultant of the two vectors, two forces? Okay, if you look closely here, we have here this component. If you look closely, this component is 15 to sine of 20, and this component is 15 sine of 20, isn't it? Achha, this component is, if you look here, this is 40, this is going to be 6 cos of 40 because it's adjacent to the angle here, and this component is going to be 6 sine of 40, right? I told you what you'll do is, if you have fx here, fx is going to be what? It is going to be 15 cos of 20 plus 6 sine of 40. You'll add them. And for fy, you have 15 sine of 20, which is positive because it is upwards. And you will have here minus 6 cos of 40. And once you calculate this, you'll get the answer, which is C, right? इस तरह से आप लोगों ने करना. So you have been given here two tugs which are towing an oil rig as shown. You have been given the tensions in the cables as 4 kilonewton and 5 kilonewton. What is the total force acting on the rig due to the cables in the direction to the east? You have to find the total force acting on the rig due to the cables in the direction which is east. C is the answer, yes. You'll just find the components which are horizontal and you'll add them. आप एक component निकालेंगे ये वाला, ये हो जाएगा 4 cosine of 20, और आप एक component निकालेंगे ये which is 5 cosine of 50, और इन दोनों को add कर दें. What you have to do here is that you have been given here two vectors x and y, and you should know that vector x is here
and vector y is there, but vector x is 8 newtons and vector y is this, so minus y would be 6 newtons, you know, मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ होगा उसका, मतलब मैग्नीट्यूड वही होगा लेकिन डायरेक्शन, तो अगर ये आपके पास ये ऊपर बन रहा है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन होगा, लेकिन जो एंगल बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स नहीं बनेगा, अपवर्ड बनेगा. No, you don't need to draw a scale diagram for this. No need for that. Just have to comprehend what is happening. No, you can get the angle. If this is 8 Newton and if this is 6 Newton, if this was -6, then this would be -6. But you can write here theta. So you'll apply tangent theta is opposite over adjacent, 6/8, and you can find the answer. What is the answer? Theta is tangent inverse 3/4, 37, which is like this, right? You've been given a 10 Newton force and a 6 Newton force. You have to find the resultant of the objects and you have to find the angle with the vertical. अब देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कंपोनेंट्स बना लेने हैं. इसका कंपोनेंट यहां से बनेगा 6, ये क्या बनेगा, एक आपके पास ये बनेगा 6, ये वाला बनेगा, इसके सामने वाला हमेशा साइन होता है, तो दिस इज 6 sin 40, इसके सामने वाला हमेशा साइन होता है और इसके एडजेसेंट जो होता है दैट इज 6 cos 40. वी हैव जस्ट प्रूव दैट. अब ये राइट पे है तो ये fx जो है आपके पास दैट इज 6 sin 40 एंड fy इज +10 and this is downwards, this is -6 cosine 40. इसका जरा मुझे आंसर बताएं, 6 sin 40 का और इसका, और रिजल्टेंट निकालें आप. रिजल्टेंट वुड बी fx square plus fy square under root. रिजल्टेंट आ जाएगा, वो क्या आता है 6.6. अब 6.6 आपको खैर पता चल ही गया है, लेकिन आप प्रूफ करने के लिए फिर जो इसकी वैल्यू क्या थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस, हाँ 3.856 और नीचे वाले की माइनस करके, ठीक है. अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, आपने स्क्वायर लेके जब इसको किया तो आपके पास 3.856 होल स्क्वायर प्लस 5.403 होल स्क्वायर करके जब आपने किया अंडर रूट, एंड you'll find the answer as 6.6. But the story doesn't end here. You have to find the resultant vector as well. You mean that you have fy here and you have fx here and this is the resultant. आप जब एंगल निकालेंगे ना तो आपके पास वो एंगल आएगा ये वाला, वो आपके पास एंगल आएगा ये वाला. आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा ताकि आपके पास ये वाला एंगल आ जाए. तो आप एंगल निकालेंगे यहाँ पे, टेंजेंट थीटा इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. ऑपोजिट आप यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट यहाँ पे है fy which is 5.403 और एडजेसेंट क्या है आपके पास 3.856. इसका आप थीटा से निकालें तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5.403 ओवर 3.856. इससे करें आंसर क्या आता है आपके पास, इसका 54 के करीब आंसर आएगा. फिर आप 90 से माइनस करेंगे तो 36 का आ जाएगा. 54 मैंने कहा था 54 डिग्री आएगा एंड देन यू विल सबट्रैक्ट दिस एंगल, दिस, ये देखिए ये वाला एंगल आया है ये 54, फिर ये पूरा 90 से माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा.